Assalamu alaikum, dear students. This is the lecture in which we will talk about how we can find the literature in different databases. इसमें हम डेटाबेसेस के साथ साथ स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने लिटरेचर को सर्च को या तो लिमिट कर सकते हैं या उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन पर हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। साथ साथ हम एक एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि सपोज अगर हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है लिटरेचर मिल जाए तो फिर हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे एंड इफ वी वांट टू लिमिट आवर सर्च रिजल्ट तो फिर क्या करेंगे। तो एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर आपको होनी चाहिए कि लिटरेचर से मुराद क्या है और फिर इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी इस पर भी हम आज बात करेंगे। So the collection of journal articles which has been published in various journals. So वो articles जो journal में publish हो चुके हैं, books, book chapters, conference papers, dissertation से मुराद thesis है, essays and opinion papers published to assist clinicians, researchers and aspiring professionals in developing and answering the important questions. अब यहाँ पे जो सोर्स टाइप ऑफ लिटरेचर है that can be broadly divided into two types, that is on the basis of its sources. So literature we have from the primary source and literature from the secondary sources. इसको हम प्राइमरी लिटरेचर भी कहते हैं और सेकेंडरी लिटरेचर भी कहते हैं। So what we mean by the primary sources of primary literature? Primary source literature which is obtained from the primary sources will be called as the primary literature. What are the primary sources? Primary sources are those in which authors provide the original report of research they have conducted. ये randomized control trial हो सकती है, ये एक केस रिपोर्ट हो सकती है, ये क्रॉस सेक्शन स्टडी हो सकती है, ये एक साइकोमेट्रिक स्टडी हो सकती है, ये एक कोहॉर्ट स्टडी हो सकती है, केस कंट्रोल हो सकती है, प्री एंड पोस्ट स्टडी हो सकती है। लेकिन ये वो रिसर्च है जो अथर्स ने खुद की है और फिर इसको रिपोर्टिंग एक आर्टिकल मैन्युस्क्रिप्ट बना के उसको उन्होंने पब्लिश किया है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी लिटरेचर। On the other hand, what is secondary literature? The literature which we obtain or which we have from the secondary sources, they will be called the secondary literature। और ये वो लिटरेचर है जो जिसमें अथर्स जो हैं दूसरे अथर्स की जो कंडक्ट की हुए रिसर्चेस को, आर्टिकल्स को, उसको कंबाइन करके उसको समराइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी लिटरेचर। The secondary sources of information are those in which the authors summarize their own work or the work of others. Secondary sources include books, book chapters, journal articles that review the literature, editorial and opinion papers. Secondary sources are useful because they organize the literature for the reader and provide a ready list of the primary sources on the topic of interest. So secondary sources में यहाँ पे है secondary literature, इसमें अपनी ही जो की हुई रिसर्च के साथ साथ दूसरों की हुई रिसर्च उन दोनों को कंबाइन करके उस पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक चैप्टर लिख देता है, एक बुक लिख देता है या एक आर्टिकल लिख देता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी लिटरेचर। अब आते हैं मेटा एनालिसिस एंड क्रिटिकल रिव्यूज। जो क्रिटिकल रिव्यूज है या सिस्टमेटिक रिव्यू है, नरेटिव रिव्यू है, स्कोपिंग रिव्यू है, तो ये जितनी भी रिव्यू स्टडीज होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी लिटरेचर की एक हाइब्रिड होते हैं, मिक्सचर होती हैं। सो लिटरेचर जो है दैट कैन बी अ प्राइमरी लिटरेचर, सेकेंडरी लिटरेचर एंड द टर्शियरी लिटरेचर। So what are the primary literature? Journal articles describing the original research, the thesis and dissertations, conferences, abstract and proceedings. And what we call the secondary literature? The books, book chapters, journal article that review the literature, editorial and opinion papers. What is the tertiary literature? That is the mixture of both the primary and secondary, and that is the meta-analysis and systematic reviews. Questions आपसे इस तरह आ सकता है कि suppose the book chapter is a type of primary literature,
secondary literature, tertiary literature, it is not a literature. इसी तरह the conference abstract, this is the primary literature, secondary literature or tertiary literature. Yeah, systematic review and meta-analysis, that is an example of the प्राइमरी लिटरेचर, सेकेंडरी लिटरेचर और टर्शियरी लिटरेचर। तो इस तरह की जो है एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकते हैं। अब हम जो है अगर देखना चाहते हैं कि लिटरेचर को सर्च करें, टू वी और वी हैव टू सर्च, और किस तरह सर्च करेंगे, इस पर आगे हम बात करेंगे। सो बहुत सारे वेब बेस्ड डेटाबेसेस है जिसको हम जो है सर्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने टॉपिक से रिलेवेंट डेटाबेसेस ढूंढेंगे। That's why every database is not meant for our topic, not meant for us. So that's why we have to search the databases which having literature relevant to our topic. So बहुत सारे databases होते हैं और तकरीबन तमाम databases इनका जो सर्चिंग स्ट्रेटेजी है, एडवांस सर्च है, सिंपल सर्च है, कंबाइनिंग है, तो ये तकरीबन सब में एक जैसा होता है। अब सर्च फील्ड किसे कहते हैं? ये कैटेगरीज हैं जो हमारे जो सर्च आइटम्स को उसको सर्च करने में या रेलेवेंट आइटम्स को सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं, और उसको कंसाइज ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लिमिट करने में हमारी हेल्प कर देते हैं। सो द मोस्ट कॉमनली यूज इज दैट ऑफ द कीवर्ड्स, वर्ड्स दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड समटाइम टू द मेथड ऑफ स्टडी। अब ये कीवर्ड जो है फिर मिक्स टर्म हो सकते हैं या नॉन मिक्स टर्म हो सकते हैं। मेडिकल मिक्स से मुराद क्या है? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। अगर हम पबमेड में या मेडलाइन में सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर फिर जो है ये मिक्स वर्ड जो है यूज करना बेहतर होगा। व्हाट इज द बूलियन ऑपरेटर्स? थोड़ा बहुत हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में इस डिस्कशन की थी, यहाँ पर हम रिपीट करेंगे कि द एंड आर नॉट, these three they are known as the Boolean operators. So these operations from a set of ways to either limit or expand searches, and all databases use them. The operation AND will limit a search because the search engine need to find two terms that appear together. So we want to limit our research, so then we will use the AND. So remember this point, uh, among the Boolean operators, which one will limit the search, which will expand the search. So and not, these two operators, they limit our search, while the or they will expand our search. So for example, this is a person, a researcher who is going to search literature for the continuous passive movement, as well as in the patient with the rheumatoid arthritis. At the same time, he is also searching for the total knee arthroplasty. सो यहाँ पर अगर हम इन तीन वर्ड्स को देखें तो ये कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट, PKA, द टोटल नी आर्थोप्लास्टी एंड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तीनों कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स है, और हम अगर इनको फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टोटल नी आर्थोप्लास्टी और कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट इनकी तरह इनकी लिटरेचर हो, लेकिन अगर उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ किए हैं तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इट मीन कि नॉट जो है कि यहाँ पर ये सर्कल, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सर्कल का जितना भी हिस्सा TKI के साथ आता है, CPM के साथ आता है, तो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। सो इट मीन इस सर्कल से बाहर जितना भी है ये दोनों जो है CPM एंड TKI ये हमारे पास आ जाएंगे। फिर हम कनेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ वो चाहिए कि सिर्फ TKA और CPM दोनों इसमें शामिल हो, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो। तो ये जो एक ओवल शेप, ये शेप आ जाती है, दिस इज द जहाँ पे TKA भी अवेलेबल है और CPM भी अवेलेबल है। अब ये जो TKA का व्हाइट हिस्सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल नी आर्थरोप्लास्टी का लिटरेचर है। White part of the CPM, this is the total literature which has only CPM, but they don't have the rheumatoid arthritis, they don't have the TKA. इस तरह rheumatoid arthritis का भी ये white हिस्सा जो है, जो dotted या shaded नहीं है, this is only the data which only limited towards the rheumatoid arthritis. अब एंड में हम चाहते हैं कि इसमें से एक यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, वी कैन सी हियर दिस ट्रायंगुलर एरिया,
दिस इज द एरिया जहां पे सीपीएम, टीकेए और रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये तीनों जो हैं ये यहाँ पर होंगे। अब हमें जो है ये जितना भी डॉटेड एरिया है ये नहीं चाहिए। तो इट मीन शेडेड एरिया हमें चाहिए, लेकिन शेडेड में ये डॉटेड एरिया जो है दिस इज कंटेन द थ्री वर्ड, द सीपीएम, TKA and rheumatoid arthritis, it will be excluded, and we will have only this gray shaded area which contain only the CPM and TKA together, but they don't have any topic related and discussion about the rheumatoid arthritis. So that is the, और अगर हम इनको R से कनेक्ट करते हैं तो फिर ये होगा कि उसमें तमाम लिटरेचर आ जाएगा जिसमें सिर्फ सीपीएम है, सिर्फ टीकेए है, सिर्फ रोमेटाइड आर्थराइटिस है। वहां पे टीकेए एंड सीपीएम दोनों हैं, या सीपीएम, टीकेए एंड रोमेटाइड वो तीनों हैं। तो इफ दे आर इन द आइसोलेटेड form, or if they are in the combined form, in all cases every literature will be retrieved. So this is actually the R which expand or limit the not, and they will limit our literature search. मिसाल के तौर अगर हम पबमिट का एग्जांपल ले लें और इसमें हम स्पाइनल कार्ड इंजरी एंड कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट सर्च कर ले, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी इट मीन देयर आर ओनली एट दैट टाइम, अब शायद जो है थोड़ा टाइम पहले जो ये सर्च किया गया था, अब अगर हम राइट नाउ सर्च करें तो माइट भी ये नंबर इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज डे टू डे देयर इज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ लिटरेचर and articles which is being published, and they are just added to the literature. So the body of literature that increases day by day. That's why we can't say that still right now there would be these 3 results. So at that the time which in which this search was carried out, there was only 3 studies in which there was both the spinal cord injury and continuous passive movement. Between these continuous passive movement and spinal cord injury, they were connected with R. इट मीन कि ऐसी लिटरेचर मुझे चाहिए जिसमें या तो स्पाइनल कार्ड इंजरी अकेले हो, या इसमें कंटिन्यूस पेशी मूवमेंट हो, या उसमें ये दोनों कंबाइन हो, तो तमाम के तमाम मुझे चाहिए। सो दैट वाज 32,988 रिजल्ट ऑन द पबमेड। फिर हमने उसमें कहा कि स्पाइनल कार्ड इंजरी, बट यहाँ पे कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट जो है वो नहीं चाहिए। अगर वो अकेले हैं या जो है ये स्पाइनल कार्ड इंजरी के साथ जो है अगर कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट कंबाइन है तो हमें नहीं चाहिए। सो इट यील्डेड 32,404। व्हाट डज इट मीन कि ये जो 32,988 में ज्यादातर जो लिटरेचर था दैट वाज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब क्योंकि यहाँ पे हमने कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये 32,000 ऑलमोस्ट वही की वही है, जस्ट सम हंड्रेड्स ऑफ द लिटरेचर दैट इज बीन एक्सक्लूडेड। On the other hand, if we search about the continued passive motion and not spinal cord injury, so that is only 581 results on the PubMed. And if we add these two, almost they will give the same number, which is 32,998, almost applicable. तो ये इस तरह है कि हम जो है इसको एंड आर नॉट से जो है कनेक्ट करते हैं, जस्ट टू लिमिट आर expand आर to increase, limit or expand our literature search. So this is the this example when we combine the we have select the database PubMed from here. There is a list of, if we click on this down drop menu, so we will have a long list of databases, and if we select the PubMed and there are spinal cord injury and continuous passive movement, so we have only 3 studies. So इस एंड की तरफ देखिए कि हमने इनको कंबाइन किया है एंड के साथ, स्पाइनल कार्ड इंजरी, फिर इसके साथ हमने कैपिटल लिखा है एंड दोनों को हमने क्लोज किया है इन दैट इन्वर्टेड कॉमर्स, और यहाँ पे पब्लिश होनी चाहिए। यहाँ से हम और भी इसको कर सकते हैं। इफ वी क्लिक ऑन द पब्लिकेशन डेट लास्ट 5 years लास्ट 10, यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे ह्यूमंस पर हो गए हैं या एनिमल्स पर हो गए हैं, या इन्हीं का अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते तो ये तमाम के तमाम लेके आएंगे। यहाँ पे से हम स्टडी डिजाइन कर सकते हैं कि रिव्यू स्टडी चाहिए या क्लिनिकल ट्रायल चाहिए, और यहाँ पे फिर एज, जेंडर, बाकी जो एडिशनल फिल्टर वो भी यहाँ से साथ हम करा सकते हैं।
Similarly, this is the next जहाँ पे हमने कहा था कि spinal cord injury are continuous passive movement. So this is actually the result. This is the spinal cord injury net continuous passive movement. So that will give us the 32,404. And this is the continuous passive movement. अकेले अगर हम इसको सर्च करें तो this is 584. अब अगर यहाँ पे हम इसके साथ लेके कि कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट नट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सो इट विल गिव अस 581. ये 3 इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि जब यहाँ पे हमने एंड के साथ कंबाइन किया था तो ये कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट के साथ स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंबाइन 3 स्टडीज में है। तो यहाँ से हमने कहा कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो चाहिए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ अगर कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो कितनी स्टडीज थी जिसमें कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दोनों थी? 3। तो इन ये टोटल ये सिर्फ कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट चाहे अकेले हो चाहे किसी और के साथ हो, तमाम इस टाइम पे लिटरेचर कितना था? दैट वाज 584। वो 3 जो दोनों जिस पे स्पर्णकार इंजरी के साथ है, हमने स्पर्णकार इंजरी को यहाँ से निकाल दिया नाट के जरिए। तो अब वो जो 3 स्टडीज जिसमें स्पर्णकार इंजरी और कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट सीपीएम दोनों कंबाइन थे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो रिमेनिंग 584 से रह जाएंगे 581। अब सर्च लिमिट है, searches can be limited using one or more parameters. These limits are found in the advanced search section of the database. Publication date or a time span of publication, which is useful because often only the most recent sources are sought. Language can be limited to English or one of the several other languages. Limiting result by article type and the PubMed. यहाँ से article type we may have the clinical trial RCTs or the review studies. This is the text availability. सिर्फ abstract है, pre full text available है, but they may be paired. इस तरह publication date पर कि within recent 5 years, within recent 10 years, या यहाँ से हम rank जो है वो custom कर सकते हैं. This is on the base of species. और यहाँ पे फिर additional और भी बहुत सारे हैं जिससे हम अपनी search को limit कर सकते हैं. So these are only clinical trials and the continued passive movement, not spinal cord injury. So that is result is 112. यहाँ पे हमने clinical trial यहाँ पे click कर दिया. Both clinical trial and review articles on continued passive movement, not spinal cord injury. So this is 216 is हमने दोनों combine किए हैं. अब हम चलते हैं towards some common databases which we can search and for our literature search. Then it depend on our topic कि हमारे topic की जो keywords है वो उसके साथ relevant कौन से databases है. सबसे पहले बात करते हैं हम PubMed को and Medline. Medline जो है this is the part of the PubMed. जिस Medline जिस पे mesh term सिर्फ use होते हैं उसको हम Medline कहते हैं. And the US National Library of Medicine maintains a database of medically related information called the Medline and make it available electronically as the database PubMed. The entries in the database are indexed according to the medical subject heading, which is called as the MISH. So remember what is the abbreviation of the MISH? That is the medical subject heading of the National Library of Medicine. It is available to anyone. This is the link to the PubMed. PubMed is probably the first database researchers will want for a medical related subject, such as the effect of various drugs. Not only the medical, but the dental sciences, the nursing sciences, the rehabilitation sciences, the paramedical sciences, pharmaceutical sciences, all health related sciences, they will include the PubMed in their search, because this is not only the huge one, but it contains the common and the literature related to the all sector of the health sciences. Although exceptionally complete, PubMed can be daunting to the use. However, the site itself has various tutorials as well as frequent asked questions to help. The next is the Embase. Embase is a proprietary database that combine Medline with additional resources, particularly in biomedical research and
pharmacology. Available by subscription, most users gain access to this database through an academic library or an employer subscription. The next is the Sinhal. A Sinhal was developed in 1956 to meet the needs of non-physician healthcare practitioners. So Sinhal is specifically made for the allied health and the nursing uh, healthcare professionals. Some journals of interest to nurses and other health professionals may not be indexed in the midline. Sinhal may provide a mean to gain access to these journals. In addition to journals, Sinhal indexes books of interest to nurses and other healthcare professionals and nursing dissertations. The Sinhal indexing terms are based on mesh but provide for greater specificity in terms of related to such each profession presented in the index represented in the index. Why they are indexing the terms based on mesh? Because it combines the midline with other additional resources. Libraries that serve health professionals generally subscribe to Senal. It is also available online by subscription to the individual users. The next database is the PsycInfo, which is related to the psychology related literature. And this database, PsycInfo, that is produced by the American Psychological Association, provides extensive coverage of journals and psychology and related disciplines, as well as some books, chapters, dissertation, and various university and government reports. Information is available at this is the link to the that PsycInfo, which is being managed by and controlled by the American Psychological Association, the APA. Most academic libraries and large employers with psychology services purchase an institutional subscription to PsycInfo, and searches are available through their web pages. Individual subscriptions are available as well. Among the rehabilitation professions, PsycInfo is particularly useful for speech language pathology and audiology because speech language and audition are considered topics are related to the psychology. It is quite useful for rehabilitation when searching for generalized topics such as quality of life or cognitive changes with aging. It may be less useful in finding rehabilitation literature that is medically oriented or finding information about treatment that have no psychological correlate. So the main thing is that if your topic is relevant to some psychological aspect, if you are searching for the psychological effects, if your topic is related to some other aspects related to the psychological sciences, so then Psychem is the best one and it should be included in your search databases. For example, a search on the continued passive motion without any modification yielded 15 results. Here is the same search on Sinha yielded 122. It means कि continued passive motion के लिए this psych info is not a best option because continued passive movement has nothing to do with the psychology, but still it may have the continued passive motion because it's maybe related to the rehabilitation. On the other hand, when a continuous passive motion when it was searched and the Sinhal, so the total resulted which yielded were 122. So इसलिए हम जब टॉपिक सर्च करते हैं तो पहले ये देखना चाहिए कि इसके लिए कौन सी डेटाबेसेस जो हैं ये स्पेसिफिक होंगी। तो अगर आपके टॉपिक पे साइकोलॉजी रिलेटेड कोई इश्यू है, साइकोलॉजी रिलेटेड आप उसकी असेसमेंट करते हैं या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आप देखना चाहते हैं या रिलेशनशिप ऑफ द मेडिकेशन एंड दैट्स इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑन इट, मूड डिप्रेशन देखना चाहते हैं, एंजाइटी देखना चाहते हैं, तो इस तरह के टॉपिक जो है आपको पेरी सेकंड फोन में मिल सकते हैं। अगर आपकी टॉपिक में एजुकेशन रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन है या टीचर्स पर देखना चाहते हैं या रिलेटेड टू द क्लासरूम देखना चाहते हैं, सो फिर ये एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये एक एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स के लिए एक बहुत बड़े डेटाबेस है। और इसका जो लिंक है दिस इज www.eric.education.ed.government, ये यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है न इसको रन करते हैं बल्कि इसको मैनेज भी करते हैं और इसको जितनी भी उसकी फाइनेंशियल
फंडिंग है, उसको स्पॉन्सर है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करते हैं, एंड इट इज फ्री डेटाबेस एक्सेस टू एनीवन. So if your topic related to the classroom, teachers, and other educational documents, you may this search this database, and this one is maybe a very useful database for you. Like PubMed, it can also be accessed through different interfaces available in academic libraries. Note that in addition to journal article and other typical research literature, ERIC contains grant reports and other documents written by researchers but without peer review. वो चूंकि डायरेक्ट रिसर्चेस ने लिखी होती है और इसमें कोई पीर रिव्यू क्या होती है कि एटलीस्ट टू एक्सपर्ट जो हैं इसको जब रिव्यू करते हैं, इसको असेस करते हैं और इसमें गलतियां निकालते हैं, गलती निकालने के बाद ये अथर्स को भेज देते हैं और अथर इस गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये गलती नहीं है, ठीक है, तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन दे देता है. लेकिन ओवरऑल जो है इसकी बेनिफिट ये होगा कि द एंड रिजल्ट जो टॉपिक आएगी वो एक अच्छी क्वालिटी की होगी, न टेक्निकली बल्कि इंग्लिश ग्रामर और वहाँ पे साइंटिफिकली जो है इसमें इट विल बी रिवाइज्ड एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ दैट आर्टिकल. लेकिन इसमें एरिक में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ग्रांट्स होते हैं या सपोज डिसर्टेशन ऑन द एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक, वो भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन चूंकि वो डायरेक्ट पब्लिश आर्टिकल नहीं होती है तो इसके विदाउट पीयर रिव्यू ही शामिल होते हैं. तो गूगल स्कॉलर आप सब ने शायद इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी. वन इज द गूगल, द अदर इज द गूगल स्कॉलर. तो ये मैनेज बाय गूगल और ये डेटाबेस नहीं है, ये एक सर्च इंजन है. तो जस्ट लाइक सेमेंटिक स्कॉलर, तो सेमेंटिक स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर, दीज आर द टू कॉमन search engine. Google Scholar is more common, while the Semantic Scholar is new as a new one. So that's why among the researchers that is not so common as the Google Scholar is. सो गूगल स्कॉलर जो है मुकाबले में सेमेंटिक स्कॉलर पर इतना यूज नहीं होता, लेकिन गूगल स्कॉलर जो है ये तकरीबन हर एक डेटा जो बंदा जो है जिसको हेल्थ साइंस रिलेटेड कोई सर्च करता है, तो जस्ट लाइक द पबमेड उसकी लिस्ट में जो है गूगल स्कॉलर भी जरूर होगा. So Google Scholar indexes literature on a very broad array of the professional literature, and this is actually its website. और इसमें न सिर्फ ये आर्टिकल्स बल्कि इसमें जो थीसिस होते हैं, बुक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल्स, ये तमाम इसमें जो हैं अवेलेबल होते हैं. इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि ज़्यादातर जब आप सर्च करते हैं तो अमूमन जो आपसे ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं वो पहले आते हैं, एंड लेस रेलेवेंट जो है वो बाद में आते हैं. इसके अलावा जो है इसमें एक और खूबी ये होती है कि गूगल स्कॉलर में आप ईयर के लिहाज से जो है इसको सर्च कर कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे सपोज 2017 से 2022 तक की 5 साल में चाहिए तो आपको वही दे देगा. इसी तरह आप चाहते हैं कि मुझे 2024 के बाद चाहिए तो सिर्फ 2025 या 2024 वो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे. तो इसमें बहुत सारी जो है इस तरह आप फिल्टर्स लगा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन for the medical literature. Web of Science, this is another database. Web of Science consists of 7 databases containing information gathered from thousands of scholarly journals, books, book series, reports, conferences, and more. Importantly, besides indexing citation in journal and books, the Web of Science also indexes citation from conference proceedings. That's why if the question may be that how many databases are there in the Web of Science. So right now, there may be the addition of more right now because this lecture is being prepared some time ago. And maybe there may be more and more databases included in the Web of Science right now. But according to this, you have to remember that 7 databases, they are being present in the Web of Science. Dissertation abstracts international. So master thesis and more often doctoral dissertation should be considered a fruitful source of information for the searches. Dissertation abstract international now indexes virtually every dissertation written in the ProQuest Dissertation Abstract International, and you will likely find what you are looking for in the ProQuest Dissertation and Thesis. तो ProQuest International जो है या ProQuest Dissertation जो है, this is one of the best website जहाँ पे आप टॉपिक दे दें और
न सिर्फ ये कि टॉपिक से रिलेवेंट आ जाते हैं, बल्कि ये ईयरली वाइज जो है ऑर्गेनाइज्ड भी है। कि सपोज आपको चाहिए कि मुझे 2021 से 2023 तक सिर्फ थीसिस चाहिए, तो आपको इन्हीं साल में जो सबमिट की गई थीसिस है वो आपके सामने आ जाएंगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू फाइंड आउट द थीसिस। सो एमसीक्यूज में आ सकता है कि द बेस्ट डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस where we can find the thesis, that may be the doctoral thesis, the master thesis, or maybe the undergraduate thesis as well. So the best place is the ProQuest Dissertation Abstracts International. So this is the ProQuest Extract International. And if we click on the ProQuest Dissertation and Thesis Global, so it will give us this interface. And here we can see this is the largest single repository of graduate dissertation and thesis, include 4 million works and grows by 130,000 each year. International scope deposit from universities in 88 countries. यानी 88 कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज से इसमें शामिल होते हैं। As this lecture is being made few years ago, so that's why there may be more and more universities and more countries being included in the list. But right now, until that day when this lecture was made, that was 88 countries, and from which the thesis being submitted can be listed in the ProQuest and accessed by 3,000 institutions who are 45,000 downloads every month. So that's why it is one of the best and largest source where we can find out the published and the submitted thesis in the undergraduate, postgraduate, or the doctoral level. This is the Cochrane library, and Cochrane लाइब्रेरी जो है ये सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस की बेस्ड है। इसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी जो है इसमें अवेलेबल होते हैं। Several references products not only inform the user of relevant sources but also provide commentary, rate the quality of articles to assist in assessing the potential value of the literature. ये जो क्वालिटी रेट की उन्होंने बात की है, तो कैक्रेन का एक अपना एक चेक लिस्ट होता है जिसको कहा जाता है रिस्क ऑफ बायसनेस। रिस्क ऑफ बायस यानी ROB, रिस्क ऑफ बायस, ROB 1 ये पुराना वर्जन है, एंड ROB 2 दिस इज द न्यू अपडेटेड वर्जन, रिस्क ऑफ बायस 2 और द रिस्क ऑफ बायस 1। तो ये जो है ये क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल को असेस करते हैं, स्पेसिफिकली रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल को। The Cochrane Library is probably the best known of these. And it is an electronic collection of evidence-based reviews of the healthcare research. So Cochrane Library is best for the systematic review and meta-analysis as well as some RCTs as well. Each review uses a systemic search of literature on the topic with expert synthesis across sources of information. Subscribers, including many medical and academic libraries, have access to a searchable database of reviews and links to the full text of reviews. In addition, relevant Cochrane reviews are indexed in the major bibliographic databases such as PubMed. The Pedro is the largest and the only one which is related to the physical therapy. This physiotherapy evidence database is a product of the Center of Evidence-Based Physiotherapy based at the University of Sydney in Australia, and they not only have made it, but right now they are managing it as well. That is completely free of cost. Everyone has the full access to the Pedro. But the problem is that कि ज़्यादातर जो इसमें लिटरेचर होता है वो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस होती हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस होती हैं एंड RCTs। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन स्टडीज या बाकी जो स्टडीज है वो बहुत कम जो है इसमें अवेलेबल होती हैं। This database include the clinical trial, systematic reviews, and practice guideline and physical therapy. The trial are rated with a 10-item checklist, the Petro scale, to help readers access the quality of the trial. So this is the Petro website. This is the advanced search in Petro. And that is the end of today's session in which we discuss what is literature, what are the types of literature, and where we can find the literature. And before that we discussed how we can limit or how we can expand our literature search. Then we discussed various databases,
their links, and when they are related to the which discipline. So that was all about the finding the literature or searching the literature.